What are the semiconductors, beta? I'm not going much detail, roughly बता दे रहा हूँ. Semiconductors are nothing but the conductors which lies in between conductors and as well as of your insulators. अगर मैं metals के बारे में बात कर रहा हूँ, basically, if I'm talking about your metals, first one is about your metals. उससे पहले अपन को दो टर्म्स याद रखना है बेटा. वन इज नोन एज कंडक्शन बैंड एंड अनदर इज नोन एज ऑफ योर वैलेंसी बैंड. तो ये तो आपको केमिस्ट्री में ऑलरेडी रफ आइडिया रहता है बेसिकली, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू आउट हियर. अब मेटल्स में क्या होता है कि कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड जो भी होते हैं ना, दे विल बी ओवरलैपिंग, सो देयर इज नो एनर्जी गैप बिटवीन देम. सो इन द इंसुलेटर्स बोलो या इन द मेटल्स बोलो, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इन द मेटल्स, इजंट इट. यहाँ पर क्या होता है, द लॉस्टली ऑक्युपाइड बैंड जो होता है कंडक्शन बैंड विच इज बीन पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये जो है ना, दे विल बी ओवरलैपिंग विद योर कंडक्शन बैंड, जिसमें एनर्जी गैप ऑलमोस्ट ऑल क्या हो जाएगी, जीरो. एनर्जी गैप इन द मेटल्स इज ऑलमोस्ट ऑल जीरो. सो कंडक्शन बैंड एंड वैलेंसी बैंड क्या करेंगे, ये ओवरलैप करेंगे. दे विल बी योर ओवरलैपिंग, दे विल बी ओवरलैपिंग. ठीक है ना, इज इट क्लियर? जैसा मान के चलो ये एक बैंड है और इसके ऊपर एक और एक बैंड है, ऐसा मैं रफली आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ. सो ये ओवरलैप कर रहा है. तो ऊपर वाला जो है ना कंडक्शन बैंड है, नीचे वाला जो है ना वैलेंसी बैंड. क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? सो व्हाट इज एन मेटल्स? मेटल्स आर बोलो कंडक्टर्स. एनर्जी गैप इसके अंदर जीरो होती है. कंडक्शन बैंड एंड वैलेंसी बैंड दोनों भी ओवरलैप कर जाते हैं बेसिकली. और इसके अंदर देखो बेटा, एक टर्म याद रखते हैं अपन, फर्मी लेवल और फर्मी एनर्जी. द हाईएस्ट एनर्जी लेवल इन द कंडक्शन बैंड filled with the electrons at absolute zero is called as the Fermi level, and the energy corresponding to this Fermi level will be called as of your Fermi energy level basically. ठीक है ना. Next one is insulators. ज्यादा डिटेल में मत जाओ वरना टाइम नहीं लगेगा, टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा इस कंडीशन के लिए. नेक्स्ट वन इज इंसुलेटर्स. इंसुलेटर्स इसके अंदर जो होती है ना, एनर्जी गैप इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. Energy gap is greater than 3 electron volt. Greater than 3 electron volt, isn't it? यानी अगर ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंसी बैंड है, दिस इज वैलेंसी बैंड, इन दोनों के बीच में जो गैप है ना, दिस एनर्जी गैप इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन. ठीक है ना. थर्ड वन इज semiconductors. What are semiconductors beta? At 0 Kelvin, at 0 Kelvin कंडक्शन बैंड जो है ना एम्प्टी होती है. कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी एंड वैलेंसी बैंड इज फिल्ड. एंड वैलेंसी बैंड इज फिल्ड एट व्हाट टेंपरेचर, 0 केल्विन, isn't it? So the metal essentially क्या होती है अब यहाँ पर, insulator. That means at low temperature, I can say that at low temperature material is acting as insulator. Material is insulator. ये वाला कंडीशन है, क्योंकि कंडक्शन बैंड में कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है. वैलेंसी बैंड तो पूरा फील्ड है लेकिन एम्प्टी बैंड, कंडक्शन बैंड एम्प्टी है 0 केल्विन के पास. तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ, लो टेम्परेचर दिस मेटल इज एक्टिंग एज व्हाट बेटा, इंसुलेटर्स. और एनर्जी गैप बिटवीन द कंडक्टर्स एंड वैलेंसी बैंड जो होती है ना राइट नाउ इसके अंदर, एनर्जी गैप इज लेसर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी ओवरलैप नहीं हो रहा, isn't it? Like say for example, energy gap is approximately 1.17 electron volt for silicon, for your silicon, whereas energy gap for your germanium, energy gap for your germanium is approximately 0.74 electron volt. This is for your germanium. That means at room temperature, some of the valency band acquires enough thermal energy and jump to the conduction band, whereas they are free to conduct the electricity part. So here we have getting one relation right now beta, this number of electrons which are being
jumping at a room temperature is given by the Boltzmann's law that number of the thermally excited electrons is N is directly proportional to your exponential to the power of your minus Eg energy gap divided by K into T. K is your Boltzmann's constant, T is your absolute temperature. So what is here right now? Number of thermally excited, N is nothing but for me what? N is thermally excited electrons. मैंने क्या बोला 0 केल्विन के पास then atom वो लेवल का अभी टीचिंग नहीं होगी बेटा वो लेवल का जाओगे तो दिमाग खराब हो जाएगा don't bother about that all things so मैं क्या बोल रहा हूँ at semiconductors at 0 Kelvin conduction band is right now for me empty valency band is completely filled so at low temperature I can say that metal is insulator और दोनों के बीच में एनर्जी गैप क्या हो जाएगी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट our energy gap for the silicon is 1.17 and energy gap for the germanium is 0.74 और थर्मली एक्साइटेड यानी रूम टेम्परेचर के अंदर जो थर्मली इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वैलेंस के अंदर जो कंडक्शन के लिए स्टार्ट करेंगे दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला n इज प्रोपोर्शनल टू और एक्सपोनेंशियल टू द पावर ऑफ माइनस एनर्जी गैप डिवाइडेड बाय k इनटू t तो इसके अंदर अपन को ये याद रखना है कि इन दोनों के बीच में जो गैप होती है बेसिकली ये वाली जो गैप होती है ऊपर क्या होता है बेटा कंडक्शन बैंड और क्या हो जाएगा वैलेंसी बैंड इन दोनों के बीच में जो गैप है राइट नाउ दिस एनर्जी गैप इज लेसर देन ऑफ योर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट lesser than of your 3 electron volt am I clear with this one ठीक है ना इतना बेसिक याद रख लीजिए बेटा चल नाउ सेमीकंडक्टर्स आप कितने टाइप होते हैं बेटा याद है आप लोग सेमीकंडक्टर्स कितने टाइप होते हैं जल्दी से बताइए एक होता है प्योर और एक होता है इम्प्योर isn't it basing upon the energy gaps so one is known as of your intrinsic semiconductor another is known as of your extrinsic semiconductor intrinsic another one is known as of your extrinsic आप लोग म्यूट हो जा रहे हैं बेटा इसलिए मैंने अनम्यूट कर दिया था अच्छा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है बेटा व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर a pure semiconductor which is a tetravalent crystal is called as of your intrinsic semiconductor isn't it so I can say this one is a pure semiconductor this is a pure semiconductor isn't it tetravalent in nature tetravalent crystals extrinsics are right now for me beta they have been doped with a pure semiconductor doped with your group 3 or group 5 doped मतलब adding impurity doped with your group 3 elements or group 5 elements doped मतलब adding impurity doping adding of impurity ये आप लोग ऑलरेडी आईपी में पढ़ चुके हैं इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा सो यानी अगर एक प्योर सेमीकंडक्टर को अगर थोड़ा इंप्योरिटी ऐड करें उसको हम लोग एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर बोलते हैं सो डोपिंग कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स अपन लेके कर सकते हैं एक तो ट्राइवैलेंट और मे बी अ पेंटावैलेंट मे बी अ थर्ड ग्रुप एलिमेंट और या फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट्स पार्ट एफिलिएशन ठीक है ना तो इसके अंदर क्या होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है बेटा इसके अंदर जो है ना इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज ह्यूज इसके अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज लो ठीक है ना क्लियर चलो एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर इज अगेन ऑफ टू टाइप्स आप लोग को याद होगा ये ऑलरेडी फिर भी एक बार लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पर वन इज नोन एज ऑफ योर एन टाइप सेमीकंडक्टर one is known as of your n type semiconductor another one is known as of your p type semiconductor n type semiconductor मतलब क्या बेटा what do you mean by n type semiconductor what do you mean by n type semiconductor
फुरकान, इस्माइल, डोपिंग किसके साथ होगी? पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट। फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट्स, फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट्स। पी टाइप सेमीकंडक्टर मतलब थर्ड ग्रुप एलिमेंट्स, थर्ड ग्रुप एलिमेंट्स मतलब जर्मेनियम हो या सिलिकॉन क्रिस्टल के साथ अगर हम लोग डाल रहे हैं, दे विल बी कमिंग अंडर योर पी टाइप। अगर फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट्स को जर्मेनियम और सिलिकॉन को हम लोग डूब करते हैं, प्योर जर्मेनियम और प्योर सिलिकॉन को डूब करते हैं, दैट विल गिव मी योर एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। क्लियर? और एन यस टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर अपने को याद क्या रखना है बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मच मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। और यहाँ पर पी टाइप में नंबर ऑफ होल्स आर मच मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ योर इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना है बेटा। इसके अंदर जो डोडाउन इंप्योरिटी की लेवल होती है ना, दैट विल बी बिलो द कंडक्शन बैंड। और जो थियरी पॉइंट्स आप याद रख लीजिए। इसके अंदर एक पॉइंट याद रखना है अपने को, होल्स। होल्स क्या होते हैं बेटा? एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, absence of electron is known as of your hole, यानी पॉजिटिव नेचर, यानी इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट, इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट। सो राइट नाउ दिस, राइट नाउ फॉर मी व्हाट? एब्सेंस ऑफ योर electron, absence of your electron is called as of your holes. Then hole is just a vacancy beta which has been created by removal of an electron from the covalent bond. That's the same mass as the remote, यानी जितना मास अपने इलेक्ट्रॉन ने निकाला ना, so I can say that mass of your holes will be equal to mass of electron। से पूछा गया हुआ एक बार बेसिकली, isn't it? एंड मास का नेचर क्या होता है बेटा? पॉजिटिव। इसका ऑपोजिट बोल रहे हैं ना, होल्स का ऑपोजिट है, तो राइट नाउ द नेचर ऑफ दैट वन इज पॉजिटिव। ओके, इज इट क्लियर? ये तो बेसिक बेसिक थिंग्स थी, आपको याद रखनी थी। चलिए, अब फॉर्मलेस प्रॉब्लम्स करने का तरीका देखिए। इसके अंदर पूछता क्या है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर number of electrons will be equal to number of holes, so that is equals to your n intrinsic. First point. Number two, at equilibrium, number of electrons into number of holes will be equal to ni square। दोनों भी रहेंगे ना बेटा, number of electrons and number of holes part deflation। ठीक है ना? थर्ड वन, n type semiconductor में n is equals to क्या हो जाएगा बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी मच मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। नंबर डेंसिटी, यानी नंबर डेंसिटी के अंदर अगर मैं बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ योर इलेक्ट्रॉन्स आर मच मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ योर होल्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मच मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। नंबर डेंसिटी, एनडी मतलब नंबर डेंसिटी बेटा, फॉर द डोनर्स, यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर डोनर्स। नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, p-type semiconductors, Na मतलब acceptors। This is almost all, number of holes are much much greater than number of electrons। ठीक है ना? और फॉर्मूला में देखो, एनर्जी गैप कैसे निकालोगे? एनर्जी गैप इज इक्वल्स टू h into nu minimum, और that is equals to hc by your lambda max। डन? हमें क्लियर? इन दोनों की यूनिट्स क्या हो जाएंगे बेटा? मीटर इनवर्स क्यूब, meters inverse cube। number density ना बेटा, density is equal to mass by volume, so it will be equal to your meter inverse cube, meter inverse cube। am I clear? यस इतने फॉर्मुलेस अपने को बेसिकली याद रखनी चाहिए इन द इंट्रोडक्शन पार्ट। एन टाइप सेमीकंडक्टर के इंट्रिंसिक के अंदर Ne is equals to NH, at equilibrium Ne into NH will be equal to Ni square। N type semiconductors are known as donors, the number of electrons are greater than number of holes। P type semiconductors are known as acceptors, the number of holes are greater than number of electrons, और इसकी यूनिट होती है मीटर क्यूब। और एनर्जी गैप निकालने का तरीका h into nu minima, और it is hc divided by your lambda max। am I clear with this one? सर, होल्स के लिए मास ऑफ होल्स इक्वल्स टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, सर जब कैसा निकाल होता रहे है हो सर? बेसिकली, सर कैसा सर? देखो सी, जो पार्ट आप निकाल रहे हो ना, तो वही पार्ट में आप डालना पड़ेगा ना, ज्यादा तो नहीं डालोगे। अब देखो हाँ एक इसके अंदर आपने इलेक्ट्रॉन वेकेंट चले गया,
तो वो प्लेस में उतना ही एक इलेक्ट्रॉन उसके सब्स्टिट्यूट वाले रखोगे ना। अब देखो इसका मास मान के चलो आपके पास m है, जो इलेक्ट्रॉन आपने निकाला, उसका एक ऑपोजिट नेचर यानी जो होल होगा उसका भी मास उतना ही रखना पड़ेगा जिसका आपने निकाला, तो ही कंपनसेट होगा ना। yes sir, yes. इजंट इट, वरना वो अनस्टेबिलिटी में चले जाएंगे। Okay, okay sir. ठीक है ना, चलिए इतना बेसिक आप लोग याद रख लीजिए। इसमें क्वेश्चन देख लीजिए बेटा, हाउ द क्वेश्चंस आर बीन फ्रेम्ड इन दिस वन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, मान के चलिए इन ए प्योर सेमीकंडक्टर, in a pure semiconductor, the number of conduction electrons, the number of conduction electrons is 6 into 10 to the power of 18 per cubic meter. Per cubic meter. My question is, how many holes are there in a sample of size 1 centimeter into 1 centimeter into 1 mm? थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट है, जरा समझिए क्वेश्चन का मेथड समझिए, बस ज्यादा कुछ भी नहीं। मेरे पास एक प्योर सेमीकंडक्टर है जिसके अंदर नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा, यानी नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स आर फॉर मी 6 into 10 to the power of 18 पर क्यूबिक मीटर क्यूब, ये इसका मतलब ही हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ द सैंपल कितना दे रखा है, देखो वॉल्यूम ऑफ जो सैंपल अपने पास दे रखा है, सो दैट विल बी इक्वल टू योर 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 mm, यानी कितना बन गया बेटा मीटर्स में बताइए। 1 सेंटीमीटर मतलब 10 to the power of -2 into 10 to the power of -2 into 10 mm is equal to 10 to the power of -3, तो कितना हो गया बेटा 10 to the power of -7 यूनिट विल बी इक्वल टू मीटर क्यूब, isn't it? अब बताइए नंबर ऑफ होल्स कितनी होनी चाहिए, मैंने अभी बताया था यहाँ पर नंबर ऑफ योर होल्स इन दी सैंपल, number of the holes in your sample must be equal to कितना, number of electrons in the sample, number of electrons in sample, जितने number of electrons निकलेंगे उतने number of holes अपने को आएंगे, isn't it? Am I clear? Yes sir. So number of electrons in the samples कितने हैं मेरे पास right now 6 into 10 to the power of your 18, और कितना वॉल्यूम के अंदर 10 to the power of -7, यानी इसको अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ right now, number of your electrons, number of electrons in a given sample मतलब क्या करूँ मैं, number of electron density into उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो that will give me number of holes. So number of electrons मतलब 6 into 10 to the power of 18 into volume of the sample is 10 to the power of -7, इसका यूनिट है मीटर इनवर्स क्यूब और इसका यूनिट है मीटर क्यूब, तो चले जाएगा, तो बना कितना मेरे पास 6 into 10 to the power of 11, that will be the number of holes. आई बात समझ में, आई बात समझ में? Yes sir. Any doubt in this one? Clear? डन बेटा, ऐसा वाला एग्जांपल बहुत सिंपल है। देखो देखो अब मैंने क्या बोला था, अगर एक मेटल में से जितने भी आप इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे उतने ही होल्स आएंगे, लेकिन इसने किसने क्या पूछा, नंबर ऑफ होल्स इन द सैंपल, कितना सैंपल दे रखा है 1 वॉल्यूम, అంటే नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सैंपल मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम विल गिव मी द नंबर ऑफ योर होल्स इन द गिवन सैंपल कंडीशन। एम आई क्लियर? Yes. चलो अगर एनर्जी वगैरह दे के वेवलेंथ वगैरह पूछा तो यू कैन कैलकुलेट ना, लाइक से एनर्जी ऑफ द फोटोन दे रखा है, वेवलेंथ दे रखा है, तो एनर्जी गैप निकालने का तरीका, एनर्जी गैप इज इक्वल टू hc बाय और लैम्डा ले लो, निकल जाएगा सीधा सीधा। हमें क्लियर? चलो और एक छोटा मॉडल ले लीजिए बेटा, ऐसा वाला मॉडल भी एक बार आप दिमाग में याद रखना है। मान के चलिए मेरे पास एक प्योर सिलिकॉन है, प्योर सिलिकॉन at 300 Kelvin, at 300 Kelvin has equal electrons and hole concentration, equal electron and hole concentration of
whole concentration of 1.5 into 10 to the power of 16 per meter cube. Okay, so doping by indium increases the whole concentration to 4.5 into 10 to the power of 22 per meter cube. Calculate the new electron concentration in doped silicon. चलो प्योर सिलिकॉन है बेटा, कितने टेम्परेचर पे? 300 केल्विन पे, isn't it? So where that means pure मतलब क्या? Intrinsic value is equal to how much for me? 1.5 into 10 to the power of 16 per meter cube. और number of holes कितने हैं इसके अंदर? Number of holes are given for me 4.5. So it is 4.5 into 10 to the power of 22 per meter cube. कुछ number of electrons, तो अपन अभी फॉर्मूला लिखा था अभी राइट ना, उसका क्या फॉर्मूला था बेटा? Ni square will be equal to Ne into your Nh. तो Ne निकालना है अपने को, तो Ne is equals to your Ni square divided by Nh. Ni मतलब 1.5 into 10 to the power of 16 का whole square divided by number of holes are 4.5 into 10 to the power of 22. So simplify कर लो and see what I am getting the answer for this. It is 1.5 into 1.5 divided by 4.5 into 10 to the power of 16 into 10 to the power of 16 into 10 to the power of minus 22. कितना रहा? 16, 10 to 5. So this will be 5 into 10 to the power of 9 meter. आया सभी को? Done? Yes, sir. चलो, और नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो बनते हैं टाइप 2, वो टाइप 1 के थे। टाइप 2 के अंदर जो सेमीकंडक्टर्स के अंदर फॉर्मूलेस पूछते हैं, वन इज मोबिलिटी जैसा करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा आप लोग ने, मोबिलिटी ऑफ ए चार्ज कैरियर, रिप्रेजेंटेड बाय म्यू इज इक्वल टू व्हाट बेटा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इजंट इट? इसके अंदर करंट कैसे निकालेंगे बेटा? current I is equals to E into A into number of electrons, velocity of electrons plus number of holes into velocity of holes. ठीक है, उसी तरह से कंडक्टिविटी ये फॉर्मूलास बाय हार्ट आप लोग कर रहना बेटा। कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट बेटा? रेसिस्टिविटी. So that will be equal to your E into number of electrons, mobility of your electrons plus number of holes into mobility of your holes. Clear? ये तो बेसिक फॉर्मूले से बेटा, इतना तो अपने को बेसिक याद रखना है बेसिकली। करंट इज इक्वल्स टू वी ना, याद है ना आप लोग? आई इज इक्वल्स टू वी ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी इनटू योर इलेक्ट्रॉन्स। ई इनटू ए मैंने बाहर निकाला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू योर इलेक्ट्रॉन्स को लिख लिया मैंने। हमें क्लियर? करंट इज इक्वल्स टू योर वी ना, mobility is equals to velocity, drift velocity divided by electric field. Conductivity is reciprocal of resistivity. Done? Clear बेटा? चलिए, अब क्वेश्चन इसके अंदर पूछा कैसे जाता है, देखो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ रफली, देन यू कैन कैलकुलेटली डू इट आउट। मोबिलिटीज of electrons and holes in a sample
in a sample of intrinsic semiconductor, in a sample of your intrinsic semiconductor at room temperature are 0.54 meter square intrinsic semiconductor mobility V inverse second inverse and 0.18 meter square volt inverse second inverse respectively. Okay, if electron and hole densities are equal, if electron and hole densities are equal to 3.6 into 10 to the power of 19 meter inverse. Calculate the germanium conductivity. Calculate the germanium conductivity. एक बार क्वेश्चन समझिए पहले अच्छी तरह से. Mobility of electrons and holes in a sample of intrinsic semiconductors. Mobility मतलब क्या बेटा? Mu is equals to your V divided by E. V is measured in what beta? Meters, isn't it? Electric field is measured in terms of your potential, isn't it? Meter per second हो गया right now for that one. And electric field is measured in terms of your potentials and as well as of a given condition. F is equals to E into Q के conditions. तो इसकी values दे रखा है अपने को mobilities की 0.54 and 0.18. And if electron hole densities are equal, that is 3.6 into 10 to the power of 19 meter inverse cube. Calculate the germanium conduction पूछ रहा है. Conduction मतलब क्या होगा? Conductivity. तो conductivity का फॉर्मूला क्या है बताओ जल्दी से. What is the formula for your conductivity बेटा? अभी लिखा मैंने. Conductivity sigma is equals to, बोल दीजिए, sigma is equals to charge of electron into Ne into your mobility of the electrons, that is nothing but equal to mu v. यहाँ पर हो गया mu v plus of your nh into your mu h, isn't it? तो अब यहाँ पर E and number of electron densities and hole densities are same, यानी हो गया n I के बराबर n इंट्रिंसिक के बराबर हो जाएगा. तो ये हो गया म्यू बी प्लस ऑफ योर म्यू एच. बस सिंपल. बट वो टाइम पे फॉर्मूला याद रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे. उसको ओवरकम कर लेके फॉर्मूला छोड़ देते हैं बेसिकली. तो सिग्मा इज इक्वल्स टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने को मालूम है 1.6 into 10 to the power of -19. तो नंबर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वैल्यू दे रखा है प्रॉब्लम में 3.6 into 10 to the power of your 19 इंटू ये हो गया 0.54 प्लस ये हो गया 0.18. इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी. I hope you can do such type of equations. ठीक है, चल नेक्स्ट पार्ट को चलते हैं. पीएन जंक्शंस, थर्ड टाइप ऑफ इक्वेशंस. पीएन जंक्शन अपने को पी टाइप सेमीकंडक्टर मालूम है, एन टाइप सेमीकंडक्टर मालूम है. इन दोनों को जो अटैच करेंगे तो जब जो कंडक्टर बन रहा है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीएन जंक्शन डायोड. And it is a single crystal of germanium or maybe a silicon beta which has been doped in such a manner that एक हाफ पोर्शन जर्मीनियम का होगा, एक हाफ पोर्शन पी टाइप का होगा और एक हाफ पोर्शन एन टाइप का रहेगा. सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ये पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर, ऐसा कुछ, isn't it? So ये हो गया P और ये हो गया ये. P is connected to the positive and N is connected to the negative. So that is called as forward bias. अगर P नेगेटिव को N पॉजिटिव को कनेक्ट करेंगे that will be called as of your reverse bias. ठीक है ना. तो इसका अगर मैं थियरी देखूं, थोड़ा बहुत रफली जा रहा हूं मैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये हो गया इसका जंक्शन. अगर मैं पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में बात करूं, पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होगा बेटा राइट नाउ? होल्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन दिस वन, ऐसा कुछ होगा, isn't it? एंड इसके अंदर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स. सो दिस इन दिस वन आर राइट नाउ फॉर मी द इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर्स, isn't it? और यहाँ पर अब मजेदार बात जो समझने की अपने को ये है कि जैसे आपने इन दोनों को लगा दिया, थोड़ी देर तक एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स जो है ना ड्रिफ्ट करेंगे. ड्रिफ्ट करके थोड़े इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाएंगे और थोड़े होल्स यहाँ पर आ जाएंगे और ये न्यूट्रल बन जाएंगे, isn't it? They will become right now for me neutral. तो अभी अगर इसको टर्मिनल दे दूं तो दिस इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल एंड दिस इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव बिकॉज होल्स आर कनेक्टेड टू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट ऑफ रिलेशन. तो इसका जो पोटेंशियल होता है दैट इज कॉल्ड एज ऑफ योर बैरियर पोटेंशियल, isn't it? यानी फिक्शियस बैटरी एक लगा रहे हैं बेसिकली. और इन दोनों के बीच में की जो डिस्टेंस होती है, जो रीजन होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं डिप्लेशन लेयर. That is called as a what? Depletion layer. So this is your N type semiconductor, this is your P type semiconductors. Clear?
isn't it? तो इसको अगर थोड़ा हम लोग डिटेल में समझे इस पार्ट के लिए, ये पार्ट तक का ये हो गया एक जंक्शन और ये हो गया डिप्लेशन लेयर के लिए, और यहाँ से इसका ये जंक्शन है बेसिकली। तो इस जंक्शन के अंदर जो है ना, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पर जो है ना नेगेटिव है और यहाँ पर जो है ना पॉजिटिव, isn't it? ये हो गया बैरियर, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर और दिस वन इज योर एन टाइप सेमीकंडक्टर। डन। यानी पी टाइप से एन टाइप सेमीकंडक्टर तक जाने के लिए दिस हैज टू ओवरकम दिस जंक्शन, इस लेयर को जंप करके जाना पड़ेगा, isn't it? इसको जंप करके जाना पड़ेगा, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर इनिशियल पोटेंशियल कम है और फिर उसके बाद ज्यादा, यानी अगर इस एक्स एक्सिस से अगर मैं इसको देखूं तो ये जो पोटेंशियल यहाँ पर है ना ज्यादा है, इस बैरियर पोटेंशियल को जंप करके इलेक्ट्रॉन को वन लेयर से अनदर लेयर को जाना पड़ेगा। क्लियर? चलिए अब इसमें थोड़े छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखना है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए, कोई बता सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां तक होगी बेटा? डिप्लेशन लेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम योर नेगेटिव टाइप टू योर पॉजिटिव टाइप, इस डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। P to N. Yeah, so it is right now from N to P. It is from your N to your P, direction of electric field. Clear? अब मान के चलो if barrier potential is around me 0.5 volt and जो depletion layer है ना, जो depth है, that is called say for example 1 micron है, 1 micron मतलब 10 to the power of -6 meter. अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस बैरियर पोटेंशियल इज इक्वल टू हाउ मच? क्या करोगे आप बताइए? इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या करोगे? बैरियर फील्ड की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी इक्वल टू पोटेंशियल जो अप्लाई कर रहे हो आप, दैट इज 0.5 वोल्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस 1 माइक्रोन 10 टू द पावर ऑफ -6 meters, यानी दैट विल बी इक्वल टू 5 into 10 to the power of 5 volt meter inverse will be the electric field. आई बात समझ में? अगर आपको डिस्टेंस दे दिया, पोटेंशियल दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो पूछा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू डिस्टेंस से ट्रैवल डिवाइडेड बाय योर डिस्टेंस, यानी डिप्लेशन लेयर का थिकनेस, दैट इज 1 माइक्रोन दे रखा है 10 पावर -6 meters, को सिंपलीफाई कर लो, दैट विल गिव मी द आंसर। ठीक है ना? चलो अब इसका सिंबल देखो बेटा, सिंबल ऑफ योर पीएन जंक्शन डायोड, so basic symbol is right now this one, arrow mark like this is your cathode and this is your anode, मतलब this is p type and this is your n type, that means this is positive, this is negative, this is a symbol of your pn junction diode. Clear? Clear beta? Yes, sir. अगर p type is connected to positive terminal, that is known as forward bias, जैसा मान के चलो ये हो गया p type, ये हो गया n type. If this is connected to positive and this is connected to negative, this will be called as of what? Forward biased. Then this one is right now positive, this one is negative, but this p is connected to negative terminal and n is connected to positive terminal. This is n type, this is your p type, this is negative, this is positive, this is called as of your reverse bias. Clear? In forward bias there is no flow of forward bias, there is a flow of a current. In the reverse bias there is no flow of your current. Clear बेटा? चलो अब इसके अंदर जो फॉर्मुलेस याद रखना है आपको फॉर डूइंग द न्यूमेरिकल्स, डायरेक्टली कर रहा हूं बेटा, ज्यादा डेप्थ में मत जाइए। जो जंक्शन डायोड का रेसिस्टेंस होता है ना, द डीसी रेसिस्टेंस ऑफ द जंक्शन डायोड, डीसी रेसिस्टेंस ऑफ द जंक्शन डायोड विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिवाइडेड बाय करंट, जैसा करंट इलेक्ट्रिसिटी में लिखते हैं ना वैसा। और एसी रेसिस्टेंस अगर लिख रहे हो, दैट इज डायनामिक रेसिस्टेंस बोलो या रेसिस्टेंस ऑफ योर एसी सर्किट बोलो, दैट विल बी इक्वल टू योर डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा आई, स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल डिवाइडेड बाय स्मॉल चेंज इन द करंट। आरडी मतलब डायनामिक बेटा, डायनामिक रेसिस्टेंस, अगर वो डायनामिक रेसिस्टेंस यूज कर रहा है देन व्हाट इज द फॉर्मूला? डेल्टा वी बाय डेल्टा आई, या आई कैन यूज हियर राइट नाउ एसी रेसिस्टेंस, एसी रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा वी बाय योर डेल्टा आई। डन? चल थर्ड वन, वोल्टेज इक्वेशन, वोल्टेज इक्वेशन फॉर डायोड सर्किट और फॉर डायोड मान के चलो, यानी applied voltage will always be equal to applied voltage
जो अपन अप्लाई कर रहे हैं, दैट वोल्टेज विल बी इक्वल टू वोल्टेज ऑफ डायोड प्लस करंट पासिंग थ्रू द रेसिस्टर, V इज इक्वल्स टू योर VD प्लस ऑफ योर I इंटू योर R। ठीक है ना। इसके अंदर और एक टर्म है दैट इज कॉल्ड एज ऑफ योर ज़ीनर डायोड। ज़ीनर डायोड, ज़ीनर डायोड के लिए VZ is equals to your input voltage minus of your RI। Zener diode works only in reverse bias, बेटा याद रख लीजिए। Zener diode works only in the reverse bias, और उसका इक्वेशन क्या है बेटा? Zener voltage is equals to your input voltage minus of your R into your I, isn't it? यानी सीरीज रेजिस्टर में अगर R की वैल्यू निकालना है मुझे, R is equals to VI minus of VZ divided by your I। तो है ना बेटा, R is equals to this one, okay? या करंट विल बी इक्वल टू योर I is equals to, isn't it? I is equals to your VI minus VZ divided by your R। Zener diode is a special type of a diode which has been used only in the reverse bias, और उसका इक्वेशन याद रख लो फॉर डूइंग द न्यूमेरिकल। ज्यादा डीप में जाओगे तो ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। डायरेक्टली रिमेंबर द फॉर्मूला, Zener voltage is equals to your VI minus of your RI। क्लियर? चलिए, एसी में आपने ये पढ़ा ही होगा ये फॉर्मूला, isn't it? DC का एवरेज वैल्यू ऑफ द DC फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर इज I नॉट डिवाइडेड बाय पाई। पर हाफ वेव रेक्टिफायर DC करंट इज इक्वल्स टू I नॉट डिवाइडेड बाय योर पाई, एवरेज वैल्यू होती है। उसी तरह से DC करंट इज इक्वल्स टू 2I नॉट डिवाइडेड बाय पाई फॉर योर फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। वोल्टेज इज मेजर्ड इन वोल्ट, करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर्स एंड रेजिस्टेंस इज मेजर्ड ऑलवेज इन योर ओम्स बेटा। हमें क्लियर? इतने फॉर्मूलेस अपने को बेसिकली याद रखना है फॉर डूइंग द प्रॉब्लम्स ऑफ योर जंक्शन डायोड। बस याद रखना है कि सिंबल कैसा होता है, और इसमें फर्स्ट फॉर्मूला जो याद रखना है फॉर डूइंग द न्यूमेरिकल्स इज नथिंग बट ऑफ योर resistance is equals to V by I। डायनामिक रेजिस्टेंस पूछा, AC रेजिस्टेंस पूछा तो डेल्टा V by your डेल्टा I per deflection। And voltage equation for diode is always equals to your beta V is equals to your diode का resistance plus of your current passing to that one I into R। Zener diode is a special type of a diode which is being used only in the reverse bias, and VZ will be equal to your V minus of RI, or R is equals to your VI minus VZ divided by I, or I is equals to your VI minus VZ divided by R per deflection। Am I clear with this one? चल एक क्वेश्चन दे देता हूं आपको, विल गेट एन आइडिया हाउ द प्रॉब्लम्स आर बीन फ्रेम्ड इन दिस वन। मान के चलो, व्हेन द वोल्टेज ड्रॉप across a PN junction diode, is increased from 0.65 volt to 0.70 volt, the change in the diode current is 5 milliampere। Done? So what is the dynamic resistance of diode? What is dynamic resistance of diode? चलो बताइए, अभी लिखा मैंने फॉर्मूला। डायनामिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बेटा, डायनामिक रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू डेल्टा V डिवाइडेड बाय डेल्टा I। गिवन क्या है मेरे पास? डेल्टा V विल बी इक्वल टू, पोटेंशियल कहां से कहां इंक्रीज हुआ बेटा? 0.65 से 0.70, मतलब दिस विल बी इक्वल टू 0.70 माइनस 0.65, that will be equal to 0.05 volt, और change in diode current is already given for me, that is equal to how much beta? 5 milliamperes, यानी that is 5 into 10 to the power of minus 3 amperes। So dynamic resistance is equals to 0.05 divided by 5 into 10 to the power of minus 3, so that will be equal to how much for me? 10 ohms। Done? अगर ग्राफ का क्वेश्चन देके कर देना तो छोटा सा ग्राफ याद रख लो इसको, फॉरवर्ड बायस के अंदर ये ग्राफ आपको याद रखना है।
current on your y-axis is being taken in milliamperes. On x-axis you are taking the voltage V. So graph is exponentially increasing ऐसा कुछ, ठीक है ना? तो मान के चलो यहाँ पर कुछ पॉइंट है ये, यहाँ पर कुछ पॉइंट है बी, यहाँ पर कुछ पॉइंट है सी, और मान के चले इसके वैल्यूज दे रखा है आप लोग को, बेसिकली ये वैल्यूज दे रखा है और इसके साथ ये वैल्यूज भी दे रखा है आपको बेसिकली। तो आप ग्राफ लेके कर सकते हो। डायनेमिक रेजिस्टेंस अगर पूछा समझो आपको, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा आई, मतलब आई कैन राइट हियर वीसी माइनस वीए डिवाइडेड बाय योर आईसी माइनस आईए, ऐसा कुछ लिख लेके अपन फॉर्मूला निकाल सकते हैं tan थीटा का कंडीशन का। हमें क्लियर? हमें क्लियर बेटा? यस यस तो आंसर बताइए जल्दी से। डिटरमाइन the currents through the resistance of circuits shown. Determine the current through the resistance. Number one, मेरे पास ऐसा डायोड है, and this is connected to a battery, positive, negative, and this is some resistance. This is 20 ohms. This is diode D2. This is diode D1. There is a flow of a current I. तो इसमें करंट बताइए। I is equals, क्या पहले बताइए D1 D2 फॉरवर्ड बायस है रिवर्स बायस है? ये पॉजिटिव टर्मिनल है बेटा और इसका पोटेंशियल है 2.0 वोल्ट, 2.0 वोल्ट, ये नेगेटिव है। D1 इज D2 और फॉरवर्ड बायस है रिवर्स बायस? फॉरवर्ड बायस। दोनों भी फॉरवर्ड बायस्ड है। अगर दोनों भी फॉरवर्ड बायस्ड है तो इसमें करंट कितना आ जाएगा जल्दी से बताइए। I is equals to V by R। V कितना कनेक्टेड है टू रेजिस्टेंस, कितना है बताइए 20, क्योंकि देयर इज अ फ्लो ऑफ ए करंट एंड दैट विल बी इक्वल टू 0.1 एम्पियर। हो गई बात क्लियर? चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी से। मान के चले दिस इज वन डायोड and this is your another diode, and this is connected to same battery, positive and negative, and there is some resistance here right now. This is 20 ohms, this is D2, this is D1. So tell me which is forward bias and which is reverse bias? D1 is forward, D2 is reverse. D1 is right now for me forward bias and D2 is right now for me reverse bias. ये reverse biased है और ये forward biased है. So reverse bias में there is no flow of a current. If there is no flow of a current, that means it will act as what beta? Infinite resistance. So current in the series circuit कितना हो जाएगा? इसके अंदर current कितना आ जाएगा? ओपन बार सर जीरो। क्योंकि ओपन सर्किट हो जाएगा ना बेटा, इसमें करंट ही नहीं जाएगा। पहली बात तो जब D2 में से करंट ही नहीं जा रहा है तो पूरा सर्किट ही नहीं बन रहा है, तो करंट इन दैट वन विल बिकम डायरेक्टली विल बिकम जीरो। हमें क्लियर? चलिए अब ये वाला बताइए। इतने सिंपली आते हैं बेटा, अगर सर्किट के डायग्राम्स आना चाह रहे, बस अपने को आइडेंटिफाई करना है विच इज फॉरवर्ड बायस विच इज रिवर्स बायस। ये 20 ओम्स है, ये 2.0 वोल्ट है, ये डायोड D1 है और ये डायोड D2 है। चलिए D1 और D2 में, D1 और D2 में बोथ ऑफ देम आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन और बोथ ऑफ देम आर फॉरवर्ड बायस्ड। कि करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा? ये फॉरवर्ड बायस्ड है, ये भी फॉरवर्ड बायस्ड है, इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं दिया, आइडियल है, isn't it? So current will be flowing in this one. So current flow होगा तो I is equals to V by R, V is equals to 2, resistance is here 20, so 2 by 20 that will be equal to 0.1 ampere. Clear? Am I clear? Yes sir. इसका बताइए। अगर मैं इसको कुछ ऐसा कर दूं, this is one forward bias right now, this is D1 और इसको मैं उल्टा कर रहा हूँ ऐसा कुछ, and this is been connected to same positive terminal, negative terminal, and there is a resistance right now. अब इसमें करंट बताइए।
पॉजिटिव नेगेटिव रेसिस्टेंस इज सेम 20 ohms, ये हो गया 2 volts, this is D1 and this is D2. Which is forward bias, which is reverse bias beta? Positive is connected to this one and positive is connected to n type यानी negative, यानी ये हो गया reverse bias और ये हो गया forward biased, यानी there is a flow of current only through this one, ऐसा कुछ जाएगा, इसमें से नीचे से करंट नहीं जाएगा, यानी I is equals to V by R. V is equals to how much for me बेटा? 2, resistance is your 20, तो इसके अंदर भी करंट आ गया 0.1 एम्पियर आ गया. Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, जरा समझ के. A 10 volt Zener diode along with a series resistance is connected across a 40 volt supply. Calculate the minimum value of resistance. Required if maximum current, if the maximum Zener current is 50 milliamps. This is a given circuit. This is input voltage and here there is one resistance like this, and Zener voltage का सिंबल ऐसा एक्सटेंडेड एस सिंबल होता है बेटा, सेम डायोड के साथ का ही, लेकिन वो स्ट्रेट वायर की जगह अपने को एक एस शेप ट्रांजैक्शन हो जाए. सो दिस इज सिंबल फॉर योर Zener डायोड, और इसके अक्रॉस देयर इज वन लोड रेजिस्टेंस व्हिच इज बीन कनेक्टेड हियर. दिस इज योर लोड रेजिस्टेंस, और इसके बाहर अपने को आउटपुट निकलेगा, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू योर V Zener. ठीक है ना, दिस वन इज योर Zener वोल्टेज बेटा, दिस इज सिंबल फॉर Zener वोल्टेज. am I clear? This one is resistance right now for me R2. This one is your load resistance RL. इसमें से इनपुट करंट जा रहा है बेटा, that is nothing but equal to your I. तो जैसे ही करंट इस जंक्शन पे आया, it will get divide. तो यहाँ पर एक करंट जा रहा है, यहाँ पर एक करंट जा रहा है. So this will be equal to I1 and this will be equal to I2. And I told you that Zener diode is always connected in reverse bias. तो पोटेंशियल इसके पास जो होगा जितना इतना होगा, तो Zener potential, these two are in parallel combination. Voltage across the Zener diode will be equal to the voltage across the load resistance. तो टोटल करंट कितना हो रहा है बेटा? I is equals to your I1 plus of your I2. I1 is equals to 50. I2 कितना है बेटा? 0. Isn't it? Okay, maximum current is passed through the Zener current is how much for me? 50 milliamperes. So that will be equal to 50 milliamperes. Yani that will be equal to 50 into 10 to the power of minus 3 amperes. Okay. Maximum current is flowing through Zener diode beta. उसलिए मैंने I2 को 0 ले लिया. Isn't it? And VZ is nothing but what? Voltage across the Zener diode. That will be equal to 10 volt. क्योंकि इसके पास जितना पोटेंशियल होगा, आपका इनपुट पोटेंशियल भी उतना ही होगा. इनपुट पोटेंशियल कितना है मेरे पास? 10 वोल्ट. उसके बराबर ही हो जाएगा. Isn't it? As current is maximum, so for maximum value of R will be equal to how much बेटा? R की वैल्यू निकालो, मैंने फॉर्मूला बताया था ना आप लोगों को. R is equals to input potential minus Zener voltage divided by current I. So it is right now input potential कितना है बताइए? What is an input potential? 10 volt. Zener voltage is how much for me? Zener voltage is given for me how much? यहाँ पर देखो. Series resistance, a 10 volt Zener diode along with a series resistance has been connected to your 40 volt supply. यानी ये input is 40 volts बेटा. Input is 40 volts. VZ is your 10 volts. Isn't it? यानी input is given for me. Input देखो 40 volts दे रखा है. 40 minus 10 volt is the Zener diode का है. That will be equal to your 10 divided by current I. I is equals to 50 milliamperes. यानी 50 into 10 to the power of minus 3. So that will be equal to how much for me? 40 minus 10. That is nothing but 30.
डिवाइडेड बाई 50 इंटू 10 पावर -3, तो कितना आ रहा देखिए 6 into 10 power 2, sir. 6 इंटू 10 power 2. 10 पावर 2, sir. 2 यानी 600 आ गया। देखो प्रॉब्लम में 10 वोल्ट जीनार वोल्टेज दे रखा है बेटा, और सप्लाई कितना दे रखा है, कितना सप्लाई कर रहा है 40 वोल्ट, यानी इनपुट वोल्टेज इज 40 वोल्ट। हमें क्लियर? सर I2 0 कैसा हो रहा सर? इसमें प्रॉब्लम है बोला ना, कैलकुलेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इफ द मैक्सिमम जीनार करंट इज 50 मिली एम्पियर्स, यानी जो करंट आई जा रहा है ना, आई इज इक्वल्स टू मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब जीनार करंट में जो जा रहा है वही करंट मैक्सिमम हो जाएगा ना, तो आउटपुट का जो करंट जो हो रहा है ना I2 मस्ट बी इक्वल टू 0। अगर I2 0 होगा तो ही मैक्सिमम करंट विल बी पासिंग थ्रू द जीनार डायोड, ओके सर, ओके। isn't it? यस सर। चलिए जीना डायोड के क्वेश्चंस बहुत करना बेटा, इससे ज्यादा हटके आपको कुछ भी नहीं आता, ये वाले मॉडल्स अपने को याद रखना है बस। ठीक, और एक क्वेश्चन करिए बेटा। Zener diode having breakdown voltage equal to 15 volt is used in a voltage regulator। Zener diode का रोल क्या है बेटा, वोल्टेज को रेगुलेट करना। The current through the Zener diode is, okay, this is a given diagram। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पर Zener diode, this is symbol of Zener diode। तो यहाँ पर है इनपुट, that is 20 वोल्ट, ठीक है, और इसके पैरेलल में एक लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है, that will be equal to 1 किलो ओम, और इसके पास जो पोटेंशियल है that is 15 वोल्ट, और इसके पास रेजिस्टेंस है 250 ohms। This is positive and this is negative, ठीक है ना। ऑप्शंस आर 5 मिली एम्पियर्स, 10 मिली एम्पियर्स, 15 मिली एम्पियर्स एंड 20 मिली एम्पियर्स। ट्राई करो। Zener diode has a breakdown voltage equal to your 15 volt, यानी VZ की वैल्यू दे रखा है, VZ is equals to your 15 volt, V input is equals to 20 volt, load resistance is equals to 1 kilo ohm, resistance in series is equals to 250 ohms। So current जो पास करेगा इसके अंदर I, that will get divided here right now, ये हो जाएगा I2 यहाँ पर और ये हो जाएगा I1, ठीक है। So if I'm calculating the value of I naught or I1 is equals to your potential difference divided by resistance। इन दोनों के बीच में potential difference कितना हो जाएगा बेटा, 20 minus of 15 divided by your resistance, resistance is 250, so that is right now 20 minus 15 is 5 divided by 250, that will be equal to how much for me beta, 5 ones are 5 5s are, isn't it? इसको और simplify कर लो,
एंड इसको मैं डिवाइड एंड बाय 4 कर लूं, सो 5 4 20 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 250 into 4 इज योर 1000, ये वाला चले गया, दैट विल बी इक्वल टू 20 मिली एम्पियर्स आ जाएगा I1 की वैल्यू। क्लियर? नॉट I1, ये जो करंट है ना इसमें से जो जा रहा है I की वैल्यू, I नॉट ले लो इसको बस। I नॉट इज इक्वल्स टू डेल्टा V, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल इज 20 और यहाँ पर पोटेंशियल इज 15, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया और जिसमें से करंट जा रहा है 250, सो इट इज 20 मिली एम्पियर्स। क्लियर? तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए? फर्स्ट ऑप्शन। आया 5 मिली एम्पियर्स। टोटल करंट कितना है बेटा मेरे पास? 20 मिली एम्पियर, isn't it? तो इसमें कितना करंट जाएगा? इसके पास ऑलरेडी पोटेंशियल है, तो I1 विल बी इक्वल टू, I1 इज इक्वल्स टू योर V डिवाइडेड बाय R, isn't it? और I2 will be equal to how much beta? Vz divided by 1. Vz is how much for me? 15 divided by your 1. So this will be equal to how much for me? 15 milliamperes. ये 1 किलो ओम है ना बेटा, तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 15 milliamperes, यानी 20 में से अगर 15 इधर चले गया तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई? 5 milliamperes आ गई, so it will be your 5 milliamperes. Clear? आफिया मना 0.02 एम्पियर, हाँ 0.02 एम्पियर। कौन सा समझ में नहीं आया आफिया? यस सर 0.0। देखो बेटा 5 इंटू 250 है ना, तो मैंने डिवाइड बाय 4 कर लिया, 5 4 20, 20 डिवाइडेड बाय 250 इंटू योर 4, 250 इंटू 4 मतलब कितना हो गया बेटा? 1000। 10 to the power of -2 सर। कितना? 10 to the power of 2 into 10 to the power of -2। हाँ तो 20 मिली एम्पियर हो गया ना, तो कितना हुआ वो? हाँ ओके ओके मिली। 20 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 हो गया ना। यस सर यस। हाउ 5 मिली एम्पियर? हाउ 5 मिली एम्पियर बोले तो देखो बेटा, इसमें से जो करंट जा रहा है I2 विल बी इक्वल टू, I2 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R बेटा। इसके पास पोटेंशियल कितना होगा? ये 15 वोल्ट होगा, तो यहाँ पर भी 15 वोल्ट होगा ना, तो जीनार वोल्टेज का करंट ही होगा, तो 15 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इज 1 किलो ओम, 1 मतलब 1 into 10 to the power of -3, so that will be equal to 15 into 10 to the power of 3, यानी this will be equal to 15 मिली एम्पियर्स। तो I2 की वैल्यू 15 मिली एम्पियर्स है, तो I नॉट इज इक्वल्स टू, वी नो द फॉर्मूला, I नॉट इज इक्वल्स टू I1 प्लस ऑफ योर I2। I नॉट की वैल्यू 20 है, I1 मुझे चाहिए, I2 की वैल्यू 15 है, तो I1 वैल्यू विल बी इक्वल टू how much बेटा? 20 minus 15 ना, so that will be equal to 5 मिली एम्पियर्स। क्लियर? आ गया? यस सर। और एक प्रॉब्लम देता हूँ, ट्राई करिए आप लोग सभी, आई एम नॉट गोइंग टू डू। आफिया क्लियर है? सारा नबीला क्लियर है? चलिए और एक प्रॉब्लम ट्राई कर ली, कोई प्रॉब्लम। फाइंड करंट थ्रू Zener diode. Find current through Zener diode. सेम सर्किट, ए वाला रेसिस्टेंस है, ए वाला यहाँ पर Zener diode का ये सिंबल है इस तरह से, ठीक है। और इनपुट पोटेंशियल है मेरे पास यहाँ पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इनपुट पोटेंशियल इज राइट नाउ फॉर मी 20 वोल्ट, और यहाँ पर एक रेसिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ है, दिस रेसिस्टेंस इज राइट नाउ फॉर मी 1 किलो ओम एंड दिस वन इज योर 2 किलो ओम, ठीक है। और इसके पास पोटेंशियल है 5 वोल्ट। फाइंड द करंट थ्रू द Zener voltage. फर्स्ट ऑप्शन इज 5 मिली एम्पियर्स, सेकंड ऑप्शन इज 2.5 मिली एम्पियर्स, third one is 7.5 milliamperes, and fourth one is 12.5 milliamperes. Find the current through Zener diode. Find the current through your Zener diode. देखो इनपुट पोटेंशियल कितना है मेरे पास? 20 वोल्टेज है, Zener वोल्टेज का पोटेंशियल कितना है? 5 वोल्ट है, तो करंट कितना आ जाएगा पहले मुझे बताओ। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट व्हिच इज बीन फ्लोइंग? I is equals to
I is equals, इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज आई. I is equals to potential difference divided by resistance. Potential difference मतलब 20 minus 5 divided by resistance is 2 into 10 to the power of 3. And that is nothing but 20 minus 5 is nothing but 15. 15 divided by 2 into 10 to the power of 3 into 10 to the power of 3. यानी अगर उसको सिंप्लीफाई करो 15 by 2 is 7.5. 7.5 into 10 to the power of your minus 3. Isn't it? It is 7.5 milliamperes. Am I clear? So input current is 7.5 milliamperes. यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर आ गया I1 और यहाँ पर आ गया I2. तो दिस इज अ करंट I. ठीक है ना. तो इसमें करंट कितना आ जाएगा बेटा? I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? I2 इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर 5 वोल्ट है तो यहाँ पर भी 5 वोल्ट होगा ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन. So it is your potential across the Z0 diode divided by resistance across load resistance. That is 5 divided by 1 into 10 to the power of 3. And this is 5 into 10 to the power of minus 3. And this will be equal to 5 milliamperes. So you know that I is equals to your I1 plus of your I2. I की value हो गई 7.5. I1 I need to calculate. I2 is nothing but 5 milliamperes. So I1 value will be equal to 7.5 minus of your 5. That will be equal to 2.5 milliamperes. So second option will be the answer. Am I clear? हाँ बेटा, 1 किलो मतलब 10 to the power of 3. ऊपर जाएगा तो 10 power minus 3. Clear? चलिए. Next or important area और एक, that is about your transistors. Transistors are nothing but a three terminal device. This is your three terminal device. This is your three terminal device. Three terminal device. We are having two types of the transistors in our syllabus beta. One is known as of your NPN transistor. P is in between 2N. And second one is nothing but of your PNP transistor. PNP transistor. N-type semiconductor is sandwiched between two P type of semiconductors. इसको एक टर्मिनल होगा, इसको एक टर्मिनल होगा, इसको एक टर्मिनल होगा. यहाँ पर भी उसी तरह से P को एक टर्मिनल एंड N को एक टर्मिनल और अनदर N को एक टर्मिनल. तो इसका एक टर्मिनल होगा यहाँ पर, इसका एक टर्मिनल होगा यहाँ पर और इसका एक टर्मिनल होगा यहाँ पर. और इसका सिंबल देखो बेटा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसका ऐसा एक सिंबल डालो 0. यहाँ पर बेस जो होता है ना, इसको ऐसा डाल लीजिए. यहाँ पर एक ऐसा एरो, यहाँ पर एक ऐसा एरो. तो एक इसका एक इनपुट, ये इसका एक आउटपुट, ये इसका एक फिर इनपुट. ये होता है एमिटर, ये होता है बेस और ये होता है कलेक्टर. दिस इज नोन एज ऑफ योर एनपीएन ट्रांजिस्टर. दिस इज योर एनपीएन ट्रांजिस्टर. एनपीएन ट्रांजिस्टर. अब इसमें देखो इंपॉर्टेंट एरो मार्क कैसे आइडेंटिफाई करना है. सो दिस इज, बीच में क्या है मेरे पास, पी टाइप सेमीकंडक्टर है ना बेटा. तो ये हो गया एन, ये हो गया पी और ये हो गया एन. तो एरो मार्क विल बी अपवर्ड. एन से पी को जाएगा ना इस तरह से. ठीक है ना. उसी तरह से यहाँ पर ऐसे सी पर डालो, फिर यहाँ पर एक बेस हो जाएगा ऐसा, फिर ऐसा एक दे लो, फिर ऐसा एक डालो, फिर ऐसा ही, ऐसा ही, ये वाला. तो दिस इज योर बेस, दिस इज योर एमिटर, दिस इज योर कलेक्टर. अब इसका एरो मार्क देखो बेटा, यहाँ पर पी टाइप सेमीकंडक्टर, यहाँ पर एन टाइप सेमीकंडक्टर, यहाँ पर पी टाइप सेमीकंडक्टर है ना. एरो मार्क विल बी यहाँ ऊपर हो जाएगा. ये हो जाएगा मेरे पास पीएनपी ट्रांजिस्टर. यस है. ई मतलब क्या है बेटा, एमिटर. ई इज नथिंग बट फॉर मी योर एमिटर. And B is nothing but of your base, and C is nothing but of your collector. IP में पढ़ा होगा, isn't it? Emitter mention देखो बेटा, और एक बात कभी भी याद रखो, emitter और base, EB junction, emitter और base junction should always be forward biased. Collector and base junction should always be in the reverse biased. Should always be in the reverse biased. Clear? इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं बेटा एक बार. जब हम लोग एमिटर के बारे में बात कर रहे हैं,
this is your emitter, this is your base, this is your collector. ठीक है ना? तो इसको एक टर्मिनल यहाँ पर, इसको एक टर्मिनल यहाँ पर, इसको एक टर्मिनल यहाँ पर, ठीक है। सो फर्स्ट वन में अगर मैं एमिटर के बारे में बात कर रहा हूँ तो फर्स्ट वन इज साइज, उसके बाद उसका डूप, नेक्स्ट वन इज योर बेस, थर्ड वन इज योर कलेक्टर, ठीक है। एमिटर साइज इज मीडियम, बेस स्मॉलेस्ट, कलेक्टर लार्जेस्ट साइज। देखो डायग्राम, कलेक्टर का भी साइज ज्यादा है। उसके बाद हम लोग डोपिंग के बारे में जा रहे हैं। अगर डोपिंग के बारे में जा रहे हैं तो एमिटर इज हाईली डोप, हाईली डोप, और बेस इज लो डोप, और कलेक्टर इज मीडियमली डोप। ये थियोरेटिकल क्वेश्चंस पूछ सकता है बेटा, तो थोड़ा बहुत याद रख लीजिए बस। डन। तो साइज से अगर मैं पूछा जाऊं तो इन टर्म्स ऑफ साइज, कलेक्टर का साइज इज ग्रेटर देन एमिटर, एमिटर का साइज इज ग्रेटर देन बेस। अगर डोपिंग के बारे में बात कर रहा हूं मैं तो एमिटर का डोपिंग ज्यादा सबसे, उसके बाद कलेक्टर, उसके बाद बेस। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा तो यू कैन राइट दैट वन। Emitter based junction should always be forward bias and collector based junction should always be in the reverse bias. Clear? और एक जो फॉर्मूला इसमें यूज होता है फॉर डूइंग द न्यूमेरिकल्स, फर्स्ट वन इज emitter current will be equal to your sum of your base current plus collector current. That next one is gain factors. Gain factors. Current gain is equals to your output current divided by your input current. Output current divided by your input current. Okay? मतलब अगर ये एमिटर है मेरे पास, ये बेस है, ये कलेक्टर, इसको जो दे रहे हैं दैट इज योर इनपुट, ये बाहर जा रहा है दैट इज योर आउटपुट। क्लियर? फर्स्ट वन में देखो, अगर मैं बेस कॉमन रख रहा हूं, कॉमन बेस इज कॉमन फॉर इनपुट एंड आउटपुट, तो उस कंडीशन में कलेक्टर करंट विल बी आउटपुट, इनपुट करंट विल बी योर एमिटर, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा, कॉमन बेस के लिए। ठीक है। कॉमन एमिटर के लिए, कॉमन एमिटर, अगर एमिटर कॉमन है बोथ इनपुट और आउटपुट के लिए, देन हियर राइट नाउ आउटपुट विल बी ऑलवेज बी योर कलेक्टर करंट इसके अंदर, और इनपुट विल बी इक्वल टू योर बेस, so that is represented by beta. Next one is of your common collector. Common collector. Common collector के अंदर right now this is emitter, collector is common है, तो divided by your base, so that is represented by your gamma. ये बेसिक फॉर्मूले से आपको याद रखना है करंट गेन के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, वोल्टेज गेन। Voltage gain is always equals to your current gain multiplied by your output resistance divided by your input resistance. ठीक है, voltage gain is equals to your current gain into your output resistance divided by your input resistance. अब बताइए पहले कॉमन बेस के लिए अगर मैं लिख रहा हूं बेसिकली सर, हाँ बेटा, एनसीईआरटी में कॉमन एमिटर ही है ना सिर्फ? हाँ कॉमन एमिटर ही है बेसिकली, अल्फा बीटा गामा में कॉमन एमिटर के अंदर ही लेते हैं, लेकिन अपने को अल्फा बीटा का गामा का रिलेशन भी लेते हैं ना, तो अब उसलिए ज्यादा डिपेंड करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, करंट गेन को इस तरह से याद रख रहे हैं, करंट गेन इज इक्वल्स टू योर आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। अब डिपेंड करता है कि आपको इनपुट क्या दे रहा है, आउटपुट क्या दे रहा है। अगर आपके पास इनपुट कॉमन बेस है देन आउटपुट क्या हो जाएगा, कलेक्टर डिवाइडेड बाय एमिटर। अगर एमिटर कॉमन है तो आउटपुट इज कलेक्टर डिवाइडेड बाय बेस। ठीक है ना, ऐसा कर लो।
करंट वोल्टेज गेन इसी को से कैसे निकालोगे बेटा, करंट गेन मल्टीप्लाइड बाय योर आउटपुट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इनपुट रेजिस्टेंस। और कॉमन बेस के लिए वोल्टेज गेन बताओ, वोल्टेज गेन का सिंबल है एवी, एवी इज इक्वल्स टू योर अल्फा इनटू योर लोड रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय योर इनपुट रेजिस्टेंस। आउटपुट क्या होगा बेटा, लोड रेजिस्टेंस ही होगा, इनपुट रेजिस्टेंस इज योर आरआई सीरीज कॉम्बिनेशन। उसी तरह से इफ आई एम टॉकिंग अबाउट योर कॉमन एमिटर, common emitter is represented by AV. AV is equals to your beta into your RL divided by RI. Third one, common collector, AV is equals to your gamma into your RL divided by RI. हम लोग ज्यादा common emitter ही यूज कर लेंगे बेटा, this is the one which will be using, second one, ठीक है। उसके बाद पावर गेन, पावर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पावर इज इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू करंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था आपने। सो पावर गेन इज इक्वल्स टू योर, आई कैन राइट हियर इट एज ऑफ योर करंट गेन इनटू वोल्टेज गेन, इनटू योर वोल्टेज गेन। सो दिस इज योर पावर गेन का फॉर्मूला, पावर गेन इज इक्वल्स टू योर करंट गेन इनटू योर वोल्टेज गेन। क्लियर, फर्स्ट वन। अगर मैं कॉमन बेस के बारे में बात कर रहा हूं, कॉमन बेस के लिए, so common base के लिए power gain will be equal to how much बेटा, power gain will be equal to your current gain। current gain का फॉर्मूला क्या है बताइए, what is the formula for the current gain? current gain is represented by alpha into voltage gain will be equal to how much for me, AV। so that is equals to your alpha into, ये हो गया मेरे पास alpha output resistance divided by input resistance, यानी that will be equal to alpha square into RL divided by RI। आ गया। उसके बाद कॉमन एमिटर, so power is equals to your beta into, this one is beta into your RL divided by RI, so that will be equal to beta square into RL divided by RI। done। third one simple है, देखो बहुत, कॉमन कलेक्टर P is equals to your, directly I can write gamma into RL divided by RI, it will be your gamma square into output resistance divided by input resistance। done। चलो, वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा जाता है इस पे। रिलेशन बिटवीन, अभी निकालना है आप लोगों को, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, relation between alpha beta and gamma। I hope you got an idea what do you mean by alpha, what do you mean by beta, and what do you mean by gamma। so first one is I'm getting the relation between alpha and beta के बीच में, ठीक है ना। so देखो अपने पास ये फॉर्मूला है, एमिटर करंट इज इक्वल्स टू योर बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। what you do is divide by collector current on both the sides। अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं तो दिस विल बी इक्वल टू IE डिवाइडेड बाय IC इज इक्वल्स टू योर IB डिवाइडेड बाय IC प्लस ऑफ योर IC डिवाइडेड बाय योर IC। IC will get cancelled, so IE by IC will be equal to 1 by alpha, that is equals to 1 by beta plus 1, isn't it? तो इसमें से अगर मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं तो विल बी गेटिंग बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा, or else if I am writing alpha will be equal to your beta divided by 1 plus of your beta। so these are the relations between alpha and beta। clear? next one, if I need the relation between beta and gamma, बहुत rarely पूछता है लेकिन फिर भी एक बार याद रख लो, बहुत आसान है। same relation again, IE is equals to your IB plus of your IC। so what you do is divide by your base current, so this will be equal to IE divided by your IB, that is equals to हाँ
Divide by IB, that is equals to your IB divided by IB. This is your IC divided by IB. So I by IB क्या होता है बेटा? Emitter current divided by base current is represented by gamma. Gamma is equals to 1 plus, this will be equal to, collector current divided by base current will be equal to your beta. So gamma is equals to 1 plus beta. Done? Sure. Third one, if I need the relation between alpha and gamma, isn't it? Same. IE is equals to your IB plus IC. Isn't it? As we know, gamma is equals to 1 plus beta. So I can write gamma की value will be equal to how much beta? Gamma is equals to 1 plus beta की value already आ गई अपने को, alpha divided by 1 minus alpha. यानी gamma value will be equal to 1 minus 1 by alpha. बस हो गई बात. Isn't it? So that is the relation I can write here for the given part. Alpha into beta will be equal to your alpha into gamma will be equal to your beta. Done? छोटा सा ग्राफ है बेटा, बाय डिफॉल्ट ऐसे ही याद रख लीजिए. ग्राफ ऑफ आउटपुट वोल्टेज एंड इनपुट वोल्टेज फॉर ट्रांजिस्टर. आईपी में तो बहुत बड़ा क्वेश्चन भी था, आप लोग ने पढ़ा भी होगा या आपने एक बार जनरल क्लास में भी सुना ही होगा. रफली आप लोग को ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं. तो ये वाई एक्सेस पे अपन आउटपुट लेते हैं और एक्स एक्सेस पे अपन इनपुट लेते हैं. सो ग्राफ कुछ ऐसा होता है, कांस्टेंट होता है इनिशियली थोड़ा, उसके बाद ड्रॉप होता है, फिर देन फाइनली कांस्टेंट. इस तरह से यहाँ तक जो कांस्टेंट रीजन होता है उसको हम लोग बोलते हैं कट ऑफ रीजन, इसलिए. और उसके बाद यहाँ पर पूरा जो नीचे गिर गया इसको बोलते हैं हम लोग सैचुरेशन. इन दोनों के बीच में जो रीजन होता है दैट इज कॉल्ड एज ऑफ योर एक्टिव रीजन विच इज ऑन एंड हाफ रिलेशन, isn't it? That means this active region will act as of your amplifier, on and half का रोल करेगा. ये कट ऑफ का जो रीजन है, कट ऑफ रीजन एंड सैचुरेशन जो रीजन है, that are acting as a switch. They're acting as a switch. बस थियोरेटिकली इतना याद रख लो, काफी है बेसिकली. ठीक है, ज्यादा डिटेल में जाओगे तो फिर परेशानी हो जाएगी. सो डोंट मच बॉदर अबाउट दिस, ग्राफ याद रख लो, दैट्स मोर देन एनफ. चलिए छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, देख लीजिए इस पे से. इन ये कॉमन बेस मोड ऑफ ट्रांजिस्टर the collector current is 5.488 milliampere for an emitter current of 5.60 milliamperes. The value of base current amplification will be. डायरेक्ट क्वेश्चन से बेटा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. देख लीजिए एक बार अच्छी तरह से क्वेश्चन पढ़िए. दिस इज 51, दिस इज 48, दिस इज 49, दिस वन इज 50. इन ए कॉमन बेस एंड बेस इज कॉमन फॉर ट्रांजिस्टर बेटा. कलेक्टर करंट दे रखा है मेरे पास. कलेक्टर करंट इज हाउ मच फॉर मी? 5.488 milliamperes. For an emitter current, यानी emitter current दे रखा है, I emitter is equals to your 5.60 milliamperes. The value of base current amplification पूछ रहा है. The value of a base current amplification यानी बीटा की वैल्यू कितनी होगी. बीटा मतलब क्या हो बेटा? बीटा is equals to your collector current divided by base current. सही ना? मेरे पास collector current है लेकिन base current नहीं है. How do you calculate the base current? We know that emitter current is equals to your base current plus collector current, isn't it? So I know emitter current is how much for me? 5.60. That is equals to base current plus this will be equal to 5.488 milliamperes.
सो बेस करंट कितना बन गया बेटा, IB will be equal to 5.60 minus 5.488. That will be approximate 0.112 milliamperes. तो कलेक्टर करंट है मेरे पास 5.488 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाय बेस करंट आया कितना मेरे को 0.112 मिली एम्पियर. ये दो चलेगा, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए कितना आ रहा है इस पे. 5.488 डिवाइडेड बाय 0.112. $5.488 divided by 0.112. कितना आ रहा है बेटा? Sir, 49. थर्ड ऑप्शन. एक प्रॉब्लम आप करोगे, नीट में आया हुआ मॉडल है, सेम कंडीशन, प्लीज ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन, डोंट यूज एनी एक्स्ट्रा हेल्प. जिस डाटा लेके आप जो डाटा आपने आपके पास फॉर्मूला उसके हिसाब से कर लीजिए. ए ट्रांजिस्टर is operated in common emitter configuration. In common emitter configuration. Common emitter configuration. At PC is equals to 2 volt, such that a change in the base current from 100 microamperes to 300 microamperes produces a change in collector current. Collector current from 10 milliamperes to 20 milliamperes. The current gain is okay. Options are 50, second option is 75, third option is 100, fourth option is 25. So try करिए. The transistor is operated in common emitter configuration बेटा, emitter configuration at your यानी emitter का potential दे रखा है 2 volt, such that a change in the base current is from 100 microamperes to 300 microamperes produces a change in the collector current from 10 milliamperes to 20 milliamperes. The current gain will be equal to how much? यानी beta. Beta is equals to your delta IC divided by your delta IB. Delta IC कितना है देखो बेटा, delta IC will be equal to your delta IB is equal to how much? Base current will be equal to how much? 300 minus 100. That will be equal to your 200 microamperes. Collector current is 20 minus 10. That will be equal to 10 milliamperes. So delta IC is equals to your 10 into 10 to the power of minus 3 divided by base current is 200 into 10 to the power of minus 6 micro मतलब, isn't it? So देख लीजिए कितना आ रहा, यहाँ 0 यहाँ पर एक 0 चले गया. So this is your 10 power minus 3 into 10 power of your plus 6 divided by your 20. तो कितना आ रहा देखिए, Sir, 50. आ गया. डन बेटा. चल ये क्वेश्चन करिए जल्दी से. इन PNP transistor the collector
current is 10 milliamperes. Okay, if 90% of the holes, if 90% of the holes reach the collector, find emitter and base currents. Find emitter and base currents. चलो बताइए जल्दी से. In NPN transistor, emitter current कितना है बेटा? Emitter current is equals to your 10 milliamperes. 90% of the holes reaches the collector. यानी collector current कितना है बेटा? 90% of your collector current, isn't it? 90% is 90% of your collector emitter current. That means this will be 90 divided by 100 times of your emitter current. So emitter current will be equal to how much better? 100 divided by 90 times of your collector current. And that is 100 divided by 90 into collector current is already into emitter current. Na? Emitter current is equal. Collector current is this much. So emitter current will be equal to 100 divided by 90. Sir, IC is 10 milliamp. Collector current is na, yes, collector current IC is 10 milliamperes. So देख रहा हूँ, it is 10. तो ये बन जाएगा मेरे पास A0 चले जाएगा 100 divided by 9. 9 1 है ना 11 milliamperes. तो बेस करंट कितना हो जाएगा बेटा? Base current will be equal to how much? IE is equals to your IB plus IC. यानी base current will be equal to emitter current minus collector current. Emitter current is 11 and collector current is how much? 10. So that will be equal to 1 milliamperes. Then see this question. A transistor has a current amplification factor, मतलब करंट गेन बेटा. Current gain of 50 in a common emitter configuration or amplifier circuit. The collector current, the collector resistance is chosen as 5 ohms and input resistance is 1 ohm. Calculate the output voltage. Calculate the output voltage if input voltage is 0.01 volt. So first read the question better. We got a transistor which has a current amplification factor, yani beta. Beta is equals to your 50 volt. Sorry, no unit, na, sorry, is a factor. The transistor has a current amplification factor, current gain of a 15 common emitter configuration or amplifier circuit. The collector resistance is chosen as of your right now. Yani collector matlab RC.
output is taken as of your 5 kilo ohms. That means that is 5 into 10 to the power of 3 ohms. And input matlab base current, that is given how much per your 1 kilo ohm. So that is equals to 1 into 10 to the power of 3 ohm. And input voltage V input is given as 0.01 volt. Is asking output voltage is equals to how much. See, voltage gain of a common emitter factor is given by the formula AV is equals to beta into output resistance divided by input resistance. Isn't it? Voltage gain matlab kya? Output voltage divided by input voltage is equals to beta into your output matlab RC, input matlab RB. So I need to calculate V naught. So V naught will be equal to V input beta into RC divided by RB. Divided by your RB. Input will be equal to how much beta? Input कितना दे रखा है 0.01 into beta. Beta की वैल्यू कितना दे रखा है 50. हमने 50 का. So beta की वैल्यू दे रखा है 50 into RC की वैल्यू 5 into 10 to the power of 3 divided by RB. Base current is 10 to the power of 3. कितना आ रहा है 2.5. 10 power 3 चले गया कितना 2.5. 2.5 volts 2.5. आ गया. सर हाँ बेटा क्वेश्चन में किलो नहीं है सर. किलो नहीं है. नो सर. कहाँ पर 5 ohm and 1 ohm is given. 5 ये किलो ही होना चाहिए, मैंने गलत लिखा होगा. इनपुट रेजिस्टेंस नहीं भी होगा तो वैसे भी कैंसिल हो जा रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं. नो यस सर सेम है वैसे आंसर. भी कैंसिल ही हो जा रहा है बेसिकली. अगर माइक्रो और किलो में होता तो शायद अपने को डिफरेंस आता, तो दोनों किलो में भी है वैसे भी कैंसिल ही हो जाता कोई प्रॉब्लम. फॉर्मूला अपने को यही याद रखना था AB इज इक्वल्स टू बीटा इनटू R नॉट डिवाइडेड बाय RI. ये थोड़ा प्रैक्टिस कर लो इस फॉर्मूले को, मैं नोट्स भेज देता हूँ. देन फ्रॉम टुमारो विल स्टार्ट विथ योर करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक बार अच्छा खासा रिवीजन हो जाए, पोटेंशियोमीटर रेसिस्टर सीरीज वगैरह. देन विल ट्राई टू डायरेक्टली एंटर इनटू द ग्रैंड टेस्ट डेली. मैं तो एक ग्रैंड टेस्ट कराऊंगा, आप लोग भी ग्रैंड टेस्ट करो बेटा. रोज के 2 ग्रैंड टेस्ट आप मिनिमम अब यहाँ से करना शुरू करो 25 से. यानी 20 ग्रैंड टेस्ट पेपर्स आप लोग मेहनत करके थोड़ा दिमाग लगा के एक्सक्लूसिवली फॉर फिजिक्स के लिए सेपरेटली करो. बॉटनी जूलॉजी वैसे भी कर लोगे. फिजिक्स के लिए दिल लगा के एटलीस्ट 30 क्वेश्चंस तक का एक मॉडल पेपर में मैं कर सकूं. जो आ रहा चैप्टर्स वो चैप्टर्स में आप लोग रेगुलरली अपने आप से भी करने की कोशिश करते रहो. कैसा भी कॉलेज में भी लिख रहे हो तो वो क्वेश्चंस पहले कंप्लीट करो जो आप लोग को आते हैं बेसिकली. ठीक है. इस्माइल फर्स्ट ग्रैंड टेस्ट में कितना है फिजिक्स में? मैं लिखे सर. कई को फुरकान यस सर. कितना लिखे? एग्जाम नहीं लिखे? ईद के चक्कर में एग्जाम गोल हो गया? नहीं लिखा. नहीं लिखा. वेरी गुड. कल से तो लिखो. अभी ग्रैंड टेस्ट आज शुरू है ना? हाँ ठीक है सर. ओके चलो टेक केयर बेटा. बाय. Bye, sir. Bye, beta. Bye, Mr. Vajra.